So dear students, now we are going to solve some questions from exercise 6.3 class 12, and question number 18 is for the curve y is equal to 4x cube minus 2x power 5, find all the points at which the tangent passes through the origin. Point कौन निकालना है? Tangent is passing through the origin. Origin means 0 0, माने x is 0, y is also 0. So point on the origin is 0 0. So right here, let x1 y1 be the point on the curve. Our curve is y equal to 4x cube, curve y equal to 4x raised to power 3 minus 2x power 5. तो इसमें हम लोग करना क्या है? First we take the equation of the tangent, and that tangent passes through the origin. So first we find the slope of the tangent. That means slope of tangent, you know this thing, dy by dx. We differentiate this, otherwise you write like this, differentiating both sides, dy by dx equal to, it becomes 3 4 are 12 x square minus 5 2 are 10 and minus 1 power becomes this 4. ये हो गया dy by dx. That means slope of the tangent, और इसका एक सिंबल होता है m भी होता है dy by dx equal to this 12x square minus 10x power 4. It is the slope of the tangent. Now this slope of tangent dy by dx slope of tangent dy by dx, and point is x1 y1. So at x1 y1 equal to, we have the dy by dx, check this, 12x square minus 10x power 4, but we are taking this tangent at the point x1 y1. That means this x is x1 square minus 10 x1 to the power 4. It is the slope of the tangent. Now equation of tangent is y minus y1 equal to m into x minus x1. This is the slope of the equation of the tangent. And what is m? M is the dy by dx. It is also known as slope. And it is, and according to the question, find the points at the tangent passes to the origin. Now tangent is passing through the origin. That means origin means 0 0, origin intersecting point here, it is origin, x is, it is O, origin 0 1 0, x is 0 and y is also 0. So in the place of x and y we put it is x and it is y. So this y is 0, 0 minus y1 equals m means this dy by dx, and this x minus x is also 0 due to origin, and it is x1. Now we place the values, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस y1 equal to dy by dx at x1 y1, it is
12x1 square minus 10x1 power 4, and 0 minus x1 becomes this minus x1. So this minus and minus cancel. So what we have here, y1 equals 12x1 multiplied by here 12x1 power 2 and this ये हो जाएगा पावर क्यूब माइनस 10x1 इट इज पावर 4 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय x1 गिविंग दिस 10x1 पावर 5 हो गया ये. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड ऑल्सो our curve was y is equal to 4x cube minus 2x power 5 and actually x1 y1 be the required point, so it becomes, इसको लिख लेंगे y1 is equal to 4x1 cube xx1 y1 minus 2x1 power 5. Suppose question number 1. So we can equate that using 1 and 2. We get 1 में है y1 is equal to this and this also y1 this, so what becomes equal. So we can write here left side equal, so right must be equal. 4x1 cube minus 2x1 power 5 equals 12x1 cube minus 10x1 to the power 5. अब इसको सॉल्व करते हैं. then what we get, ये हो गया बड़ा पावर लेते हैं 2x1 power 5, this minus coming here 10x1 power 5 equals, ये हो जाएगा 12x1 cube and going that side is 4x1 cube, तो ये हो जाएगा 8x to the power 5 equal to x1 और ये घटाने से हो जाएगा x1 cube. So this 8x1 power 5 minus 8x1 cube equals to 0, and what we can take here common ले सकते हैं 8 और x1 cube, तो यहाँ से पावर 5 है, पावर 3 घटेगा तो ये हो जाएगा x1 square minus 1 because already we have taken it x1 cube common equals to 0. So it is either 8x1 cube equals 0 or x1 square minus 1 equals to 0. तो ये हो जाएगा x1 cube इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 0. एक तो 0 आ गया और यहाँ पर होगा x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर टू प्लस 1, सो x1 इक्वल टू प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 1 1 का, ये हम लोग को वैल्यू मिल गया x1 0 x1 this. And what we need x1 and y1, so we are getting x1, so we find next y1 को यहाँ से निकालेंगे. Let's see here, when x1 equals to 0, अब इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में x1 अगर 0 हो गया दैट मीन्स x1 0 y1 भी 0 मिल गया, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को मिल गया. नेक्स्ट में x1 एक बार प्लस लेंगे प्लस 1, एक बार माइनस 1 लेंगे, फिर x1 इक्वल्स टू प्लस 1, इन दिस केस व्हाट विल y1 यहाँ रखेंगे तो y1 इक्वल्स टू 4 इंटू x1 के प्लेस में 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू x1 1 पावर 5 1 ही होगा, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, इट इज 2. तो x इज इक्वल टू, व्हेन वी पुट x इक्वल टू प्लस 1 वी आर गेटिंग y1 इक्वल टू 2. नेक्स्ट वी पुट x1 इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू माइनस 1, इन दिस केस व्हाट बिकम्स y1, तो y1 चेक करेंगे फिर यहाँ y1 इक्वल टू 4 इंटू ये माइनस 1 है तो लिखते हैं इसको क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का टू द पावर 5, सो y1 इक्वल टू 4 इंटू इट बिकम्स माइनस 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 2
इंटू -1 का पावर 5 होगा -1, it becomes, it is -4 and this +2 getting -2. Hence required points are first x1 then y1 0, तो एक हो गया, x1 0 y1 भी 0 हो गया. सेकेंड पॉइंट x is 1 because we need x1 y1, 1 रखने से 2 मिला. सेकेंड पॉइंट एंड लास्ट इज if you put -1 getting -2. So it is the answer of question 18. So be careful here. If any tangent passing through the origin, you can take the point 0 0 because point on the origin is 0 0. So it was the solution of question number 18. Let's see next.